ये जो कार्यक्रम सिनॉप्सिस का जो बहुत समय से प्रतीक्षा में है सारे विद्यार्थी, ये भी हमारे प्राचार्य सर के मार्गदर्शन में ही हम इस लेक्चर को करवा पा रहे हैं। तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे गेस्ट का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। Thank you so much, Dr. Awar Singh ji. I think I'm audible and visible both. Yes sir, yes sir. Yes. चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत दिनों से जब से प्री पीएचडी कोर्स चल रहा है, हम सभी वार्ता कर रहे थे कि तमाम ऐसे मुद्दों पर हम सब कंटेंट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, करा रहे हैं और तमाम जो शोधार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं। डॉक्टर साहब को आपने बताया ही होगा कि ये सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी, मिलिट्री स्टडीज ऐसे तमाम अन्य डिसिप्लिन के लोग हैं। उन सब विद्यार्थियों के पास एक बड़ी बात थी, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए होंगे मुझे ऐसा लगता है उनमें बेसिकली जो रिसर्च हम ये कोर्स कर रहे हैं इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्लियर पता हो और उसके बाद एक अच्छी सिनॉप्सिस बना सकें जिसमें ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और टूल्स, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स के बारे में बेहद जानकारी मिले और हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जानकारी मिले, मतलब किन विषयों पर कैसी सिनॉप्सिस बनानी चाहिए और कैसे बनना चाहिए। ये आपसे मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई थी डॉक्टर आभा जी कि इसको ऐसा करना चाहिए। उस लिहाज से मेरे मन में हमारे परम मित्र प्रोफेसर बिरपाल सिंह जी का नाम आया था, मैंने आपसे जिक्र किया था। प्रोफेसर बिरपाल सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस मंच पर प्रिंसिपल पीपीएन कॉलेज के नाते। और मैं उनके बारे में आपको शोधार्थियों को बताऊं कि उनके पास एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस है। वो देश की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में पढ़ाते हैं। उसके अलावा उनका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और लॉ, इस सब का एक सम्मिश्रण उनके पास ज्ञान का है। तो इसलिए जिस तरीके आप सम्मिश्रण का एक कोर्स चला रही हैं तमाम डिसिप्लिन का, ऐसे ही हमारे पास ऐसे अकेले एक्सपर्ट्स आए हैं जो 4 डिसिप्लिन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क और आपका लॉ। उनका अपना एक एम्पिरिकल स्टडीज रही है थारू जनजाति को लेकर के, फील्ड बेस्ड काम किया उन्होंने, कस्टमरी लॉज के ऊपर काम करते हैं वो। तो तमाम आपको उनके लेक्चर के दौरान ऐसे तमाम संदर्भ मिलेंगे, ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जिससे आपको स्वयं नए विषयों के बारे में जानकारी मिल सके। शोध के जो नए नए आयाम आ रहे हैं आजकल, क्या है कि जो पूरी दुनिया में स्टडीज हो रही है उन स्टडीज में इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज हो रही हैं। तो ऐसे में जब इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात हो, ट्रांसडिसिप्लिनरी बात हो, तो ऐसे में तमाम विषयों की अपनी अपनी शोध प्रविधियां हैं और उनका एक सम्मिश्रित प्रयोग कर सकते हैं क्या, ऐसे तमाम विषयों को लेकर डॉक्टर बिरपाल सिंह जी, हमें लगता है उनके उद्बोधन से हमारे शोधार्थी, एकेडमिशियंस और तमाम जो शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर के यादव जी इसके को-कोऑर्डिनेटर हैं और ऐसे तमाम एकेडमिशियंस जुटे हुए हैं डॉक्टर साहब इसमें, जो सिर्फ इसमें प्री पीएचडी कोर्स के विद्यार्थी नहीं है बल्कि हम जैसे शिक्षक भी आपका इसमें सहभाग करेंगे आपके साथ। तो मैं विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं कि विशेष रूप से आप सबको सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, उसकी फ्रेमिंग कैसे करें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होना चाहिए और उनके तमाम उदाहरण उनके अपने शोध अध्ययनों से निकल के आपके सामने आने वाले हैं। तो आई थिंक इफ स्टूडेंट्स विल कंफर्टेबल then Dr. Sir will speak bilingually. It will be benefited to the students because we are in the Hindi belt. तो वो आप आगे हम एक पक्षी हो जाएंगे। If we will speak in English, then it will be not justice to the students of the Hindi, and if we will speak in Hindi only, then it will be injustice for the English. So you will speak Bengali, I think so. तो डॉक्टर बिरपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। We are part of the same institution, but you are the coordinator of that course. So I'm thankful to you also because you invited Dr. Birbal Singh. और आगे भी हम लोग इस लेक्चर के बाद भी जहां आवश्यकता होगी उनका अधिकार पूर्वक देते रहेंगे। जी सर, जी सर, बहुत 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 थैंक यू सर। आपका ऐसे ही मार्गदर्शन और मिलता रहे आशीर्वाद। तो मुझे लग रहा है कि ये कोर्स बहुत ही बेहतर तरीके से हम विद्यार्थियों को तक पहुंचा पाएंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पीपीएन प्राचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह जी का। और मैं इस स्टार्ट करने के पहले अपने मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय अपने विद्यार्थियों के सम्मुख रखना चाहूंगी। Dr. Birbal Singh ji is he is presently having more than
22 years of teaching experience, and currently he is Associate Professor, Panchayat Administration and Nyaya Panchayat, Chairperson, Center for Tribal Studies and Research, National Law Institute, University, Bhopal. आपका 22 वर्षों का टीचिंग का अनुभव रहा है. Prior to joining at National Law Institute, University, Bhopal in September 2006, he was associated as a guest lecturer with the Department of Sociology and Social Work in the University of Lucknow. He has also taught in the Institute of Management Sciences, University of Lucknow as faculty of MBA. He holds postgraduate degree both in anthropology and sociology with specialization in socio-cultural anthropology and political sociology respectively. As a student of anthropology, he submitted his MA dissertation on development prospects among the Bhils of Mount Abu in Rajasthan. Keen to know the cultural environment of isolated masses of the country, especially the tribals, led him to complete his doctoral work in anthropology on the topic of continuity and change among the Tharus of Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh. So the work detail थारू ट्राइब्स पर आपने काफी काम किया है. आगे मैं बताना चाहूंगी, apart from academic duties and administrative responsibilities such as member executive council 2017 to 20, member academic council 2016-19, assistant proctor, warden, boys hostel, member IQAC, examination committee, chairman, internal examination audit committee, and faculty in charge, cell for people united for law education, rehabilitation, etc. He is also engaged in research and training activities also. मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिसर्च का भी काफी अच्छा काम आपने किया है और कई उस पर विधा पर आपने काम किया है. सेंटर फॉर जेंडर एंड Health Laws, NLIU, Bhopal, in collaboration with the Directorate of Women Empowerment, Department of Women and Child Development, Madhya Pradesh, Bhopal. He also conducted 5 training programs as a coordinator on juvenile justice. Department, मैं बताना चाहूंगी कि he has more than 40 publications which have been published in international and national journals. आपने 3 books publish किया है और बहुत सारे chapters हैं जो आपके कई किताबों में publish हो चुके हैं. He is also the life member of many key academic research bodies like Ethnographic and Folk Cultural Society, Indian Sociological Society, Indian Society of Criminology, Indian National Confederation Academy of Anthropologists, and United Indian Anthropology Forum. His main area of teaching and research are sociological theories, socio-cultural anthropology, tribal and customary law, sociology of law, legal anthropology, caste and law, gender and law, law relating to affirmative action, law and social transformation, and democratic decentralization in रूरल इंडिया. तो सर ये आपका संक्षिप्त परिचय मैंने विद्यार्थियों के सामने रखा ताकि वो ये वृहत रूप से ये समझ पाए कि आपने कितने सारे डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट विधाओं पर आपका बहुत रिसर्च का भी काम है. एकेडमिक में भी आपने अपना एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आप रहे हैं. तो ये हमारे लिए सच में बहुत ही गौरव की बात होगी कि आज हम विद्यार्थियों के साथ हम फैकल्टी मेंबर भी इन आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे. अधिक समय ना लेते हुए मैं पुनः इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपना व्याख्यान दें. Thank you, Dr. Abha Singh Madam, for introducing me. Yes, I have done some of work in my core areas of research and study. Before beginning, I would like to sincerely extend my thanks to my younger brother, friend, Professor Anup Kumar Singh, the principal of PPN College, coordinator of the program, Dr. Abha Singh,
co-coordinator of the program, Dr. Krishna Kumar, for giving me this opportunity to interact myself before you all. Okay. The topic which I have been given to deliver lecture, that is titled at the research methodology, framing a research synopsis. Please allow me as a co-host so that I can share my PPT presentation that will become visible. Okay, sir. Udo, please do so that sir can present his PPT. और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, हिंदी बेल्ट का हूँ, कोशिश रहेगी कि हिंदी में बोलूं, लेकिन जो थोड़ा कभी कभी आदत खराब हो जाती है, द इंस्टीट्यूट वेयर आई एम वर्किंग, जी सर, जहाँ हिंदी बोलना क्लास में पाप समझा जाता है, तो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट एफर्ट टू स्पीक इन हिंदी एज वेल. नहीं सर, बाइलिंगुअल रहेगा तो विद्यार्थी को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड. तो डेफिनेटली आई विल ट्राई. सर, आप अपनी तरफ से पीपीटी को वो करें, डिस्प्ले पे लाएं. नहीं, मेरे में योर इंटायर स्क्रीन, ये विंडो, ये सब आ रहा है कुछ जगह. ओके, बट दैट नॉट विजिबल हियर, बट आई कैन शेयर. हाँ, यस, नाउ इट्स कैन, आई थिंक. Is this visible? I myself is unable to see this. Presentation is this coming? Yes, sir. Yes, sir. But I can't see you, some of you, if I'm opening this. Okay. चलिए, प्रेजेंटेशन में दिखता तो ज्यादा अच्छा रहता है कि एक इंटरेक्शन शो होता रहता है. उदो, इसको क्या फुल स्क्रीन में किया जा सकता है? जो स्लाइड्स हैं फुल स्क्रीन. मैं like this it's fine. Okay, but I can't you or anyone. Fine. Okay, so the topic which I have been given to deliver the lecture, the title at the framing a research synopsis. Research start from here, this diagram, some sort of windows peeping, लोग झांक रहे हैं, दिखाई दे रहा है. You can try to understand different perceptions, different viewpoints. I have tried to divide my whole lecture, almost 1 hour, which I will have to deal with you all, in 2 parts. Beginning from the part first, I will discuss about why the research, what is the importance of the research. As part of the second part of this presentation, I'll focus mainly on the topic, that is how to make a synopsis. What is the importance of synopsis in the research, especially those who are the research scholars, and even if anyone is interested to make research proposals, how it is going to help. So thus I have tried to divide the whole research work into 2 parts. Some of you might be quite aware about this type of story, what was wrong with the blind man. कुछ अंधे व्यक्ति लोग थे, उन्होंने हाथी के जिस पार्ट को छुआ, and they had tried to give their own description कि what they feel while touching the tail, touching the ear and any other parts of the body of the elephant. So the research is finding the new insights, जिसको आप शोध कहते हैं. शोध का पर्पज ये होता है कि हम कुछ नया सीखें या कुछ नया जानने का प्रयास करें. Now question may arise,
how to learn this new thing. ये कुछ नया जानने की जो हम बात करते हैं, क्यों इसको करें? Why are we interested in research? What research is or what is research? What are various concepts and issues or theories which help us while doing our research work, or while doing our research work, how we create the theory that become further the basis of others' study. So we also relate many concepts and issues as part of our research work. Theory, as we all are about, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है? A set of interrelated constructs and propositions that specify relations among variables to explain and predict phenomena. Just like a society, we say that it is the interrelations of the people based on definite patterns. Same way, theory is a kind of generalization of our ideas, which may be testified, which may be discussed, which may be argued, which may be commented. So theory becomes focal point of research study or research work in any aspects. Further, a question may arise in your mind, what were we are doing, whether this is the research? अर्थात हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करने का प्रयास करते हैं, क्या उस सबको हम शोध कह सकते हैं? या दैट ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ रिसर्च? नॉट एट ऑल. It has its own specificity. Only it can be said as a research. So just mere gathering information from resources such books or magazines is not research. And some of you might be quite aware about, in the field of research, we use the word data rather than information. It means सूचना मात्र रिसर्च या शोध मात्र सूचना संकलन नहीं है. It is तथ्य संकलन है. तथ्य means the data, the information which we received, how we further convert to make it more interpretative, to make it more approachable. So we use the word data in the field of social science research rather than the information. Okay, that is the one major difference. So no contribution to new knowledge. It means if there is no contribution, if nothing new is coming, that efforts will not be known as the research. For research, the basic purpose of research to gain new insights, to learn something new, to know something new, to explore something more. So it means it is supposed to contribute one way or other way in the field of study. Then only we can, that kind of information gathering, what we call in the field of social sciences, the data is as research. No contribution to new knowledge, although this might make existing knowledge more accessible, that is also not the research. Then you may ask, then what the research is? आखिर शोध है क्या? किसे शोध कहते हैं? शोध क्या है? It's not mere collection of data. It is systematic analysis of the collected data, systematic interpretation of the collected data. Then it becomes the research. Then it is known as the research. So what the research is? The systematic process of collecting and analyzing information or data in order to increase our understanding of the phenomenon about which we are concerned or interested. So basic purpose of doing any activities which enhance our new knowledge, which update new understanding by way of involving ourselves in rigorous activities, only that procedural aspect will be or is called research. So research means to find something new in the field of social science. Okay. Now, what are the research characteristics? Why we need the research?
what I've been told by Dr. Abha Singh, that many participants here, they are the research scholars, PhD students. So first, why you are interested? May the sake of the job, or you are also having some sort of interest to learn something new. If you're interested to learn something new, definitely this understanding of learning something new will create interest to you in the field. So this originates with a question or problem what the issue which we have taken in our hands. समस्या का चुनाव, समस्या क्या है? समस्या means the topic what we have taken in our hands, how to go further. And for that furtherance, we require the articulation of goals, the clear-cut objectives. शोध के उद्देश्य क्या है, आखिर हम करना क्यों चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं. So objectives must be clearly defined or stated as part of your research work, which we will continue in our discussion here at the later part of synopsis writing or the importance of synopsis in a research work. Follow the specific plan or procedure, systematic ordering of all the related issues. So there's a pattern is required in order to gain new insights. Pattern is required in order to enter in the field where emphasis is given on the basis of priorities related to the collection of your data. So a specific plan or procedure becomes one of the essential components of research process, and that becomes the basis of one of the characteristics of your research work, what is mentioned here. Often divides main problem into sub-problems, subdivisions. The topic which you have taken as part of your research work, you try to divide that topic into number of heading and subheadings. किस पे कहां पे जोर देना है, कैसे तथ्य संकलन करना है, और तथ्यों को संकलन करने के बाद हाउ यू आर फर्दर गोइंग टू एनालाइज द कलेक्टेड डाटा. दैट आल्सो गिव्स योर ओन स्टाइल ऑफ वर्क और वे ऑफ राइटिंग, एंड दैट ओनली डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द अदर्स in terms of the validity of your research work. Then come the accept certain critical assumptions, hypothetical aspect. So आप कहते हैं प्राकल्पना का निर्माण करना. Okay. Then come the requires collection and interpretation of data. फील्ड से जो भी आप प्राप्त करते हैं उसको आप फिर फर्दर कंपाइल करने की कोशिश करते हैं. दैट इज आल्सो इन ए ऑर्डरली वे, not in a very haphazard way, orderly way, so that it may result in concrete conclusion. Otherwise, it will deviate yourself from the kind of questions you have taken as part of research questions, or the kind of the hypothesis that you have evolved to gain new insights of the research. So requires collection and interpretation of data. You are supposed to be very serious at this stage of writing work, जहां पे आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे जो तथ्य आपने संकलन किया है, तथ्य जो इकट्ठा आपने किए हैं अपनी फील्ड से, उसको कैसे किस तरीके से व्यवस्थित क्रम में आपको उनको लिखना है जिससे कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो पाए या वेगनेस ना आ पाए, अस्पष्टता जिसमें ना दिखे. So you are supposed to be very clear and very serious in your approach at the time of writing the reports of your whole research work. So requires collection and interpretation of data. That is some of the characteristics of a research. Okay. Then research may give more insights in terms of your qualitative work or quantitative work or empirical work in depth. So good research requires
the scope and limitation of the work to be clearly defined. यानी हमें क्या करना है, हमारी सीमाएं क्या है, because there must be some sort of constants होना चाहिए, हो सकते हैं. So you have your own limitation from the field which may bar further research. So initially you are supposed to be very, very clear whether the field which you have chosen is going to help you or not going to help you. That the reference here, the limitation of the work to be clearly defined. इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए. Further, the process to be clearly explained so that it can be reproduced and verified by other researchers. And that is the purpose of the making of the synopsis before finally entering into the field, so that even laymen can understand what is expected from your research work or what you are trying to pose as part of your future research work. So there's no need of any kind of ambiguities in sentencing in writings. Everything should be clearly explained so that even a layman can understand what ultimately you are interested to do. तो जो भी आप लिखें वो क्लियर और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति नॉट द पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट may easily understand what do you mean by this. आप क्या करना चाहते हैं उसको भी समझ में आ जाना चाहिए. Further, a thoroughly planned design that is as objective as possible. A thoroughly planned design that is as objective as possible. It means you are supposed to be more scientific in your approach for planning to the field. And being scientific means objectivity in your approach. And being objective means you are not supposed to be biased or partial any way. You are supposed to be value neutral. Those who are from the field of sociology, they might be quite aware about here that value neutrality, one of the main component of the research methodology, as thoroughly explained by the great sociologist Max Weber. So objectivity is more important in any kind of research activity to draw a rightful conclusion. Further, there are certain areas which are very, very sensitive. You are supposed to be very cautious. जहां पे आपको बड़ा समझदारी के साथ काम करना होता है कि उन क्षेत्रों की, उन व्यक्तियों की आप किस तरीके से स्टडी करें या ना करें. सो यू हैव टू क्लियरली डिफाइन इफ देयर आर एनी एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व्ड, यू आर सपोर्ट बी मोर कॉशियस. को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है और लिखना भी चाहिए कि व्हाट द लिमिटेशंस आर कांस्टेंट्स व्हिच हैव इमर्ज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिसर्च वर्क. You're supposed to mention each and everything and what the limitations that you're not tried further to know more about on this issue. आपको ये भी बताने की जरूरत है कि हाँ मैंने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि परिस्थिति की विषमता को देखते हुए हमने ये निर्धारित किया कि आगे शायद इसमें हमको ज्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जानकारी that may create problem for us, for the research team, for me as a individual. Okay, so you're supposed to be more ethical in your approach while dealing sensitive issues of the societal structures. Further, data be adequately analyzed and explained. Very clear what you are collected as part of your research, that must be systematically placed in the form of writings explaining every component of that data with a clear mindset of that, so that it may be self-explanatory. उसमें कोई वेगनेस, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति पढ़े उसको, if you are not there, because you will not be there once you complete your research, your thesis, maybe in library, maybe in department,
library, or maybe anywhere in the other libraries of the India. Okay. So if there any vagueness, people read and say, oh, कुछ काम सही किया नहीं, ऐसे ही है. So that should be self-explanatory so that it doesn't require anyone other's help. So that way you are supposed to give your write-up. It is not required whether writing English or Hindi that you use too complex words or too कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वेदर इन हिंदी, जो क्लिष्ट हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल भाषा में लिखिए जो हर व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए. एंड दैट द रेफरेंस ऑफ द लास्ट वन हियर, ऑल फाइंडिंग्स बी प्रेजेंटेड unambiguously and all conclusions be justified by sufficient evidence. जो आपने लिया है सो कैसे सिस्टेमेटिक तरीके से आपने करने का प्रयास किया है. दैट इज द रेफरेंस ऑफ what do you mean by the kind of the qualitative research, or what we say the high quality research, and what are those components of good research work. Okay, now sources of research problems, from where we gather the data or get more information on the topic which we have already taken in hands. And for that purpose, we go for the review of literature. I will later come on that in detail as part of synopsis making. Here, what I'm trying to speak, just to give an overview of what research is all about, and why synopsis is so important as part of our initial research work. So, observation. It means there are different ways through which we gather the data, or different sources through which we get the data. यानी बहुत से माध्यम या स्रोत होते हैं जिनसे हम अपने तथ्य को या जो जानकारी हमको जुटानी है अपने शोध की, उसको हम एकत्रित करते हैं या प्राप्त करते हैं, which further become the basis of our main research work, or which help to get more new insight on the topic which we already taken hands, and on which if some sort of researches have already been done, this help us a lot for our research work, or this facilitates our research work to do it more time with a more serious approach, so that in case of last conclusion we may compare our data with that of the data which is already in existence. So what are those ways or sources from where we get the information about the work? Observation, general understanding. It may be participant observation, where you are directly involved in the process of that structural arrangement, or just mere a mute spectator, but still you are in the thought process, is something happening. Literature reviews, will come later on that. Professional conferences, where we meet the experts, we listen the views of others, what the findings they have from the fields. This helps to create our own understanding on the topic, and then it helps a lot once we enter in the field. Whether we are applying the doctrinal method of data collection or non-doctrinal method of data collection. It means where we are directly dealing with secondary sources of data collection or information, or primary sources of data collection. As a student of social science, generally, most of us rely on non-doctrinal method of data collections. Then the views of the experts, teachers, research scholars, many people working in different institutions, they may provide fruitful and useful insights on the topic based on their experience. Okay. Then come the stating the research problem, the topic. You may ask here why we use the word problem here.
in such type of consideration. समस्या क्यों, समस्या के चुनाव की बात क्यों करते हैं? हम तो समस्या निदान की बात करते हैं. It means we are going to find out something new. If not the new, what were in existence, how this is helping to maintain the order of their society in a given social structures, whether how the kinship system, how the religion, how the family, how marriage relations are binding together, at what are the changes through which these traditional institutional systems have been influenced and now trying to have their new pace in contemporary society. So that helps to find out the research in the field of your orientation, जहां पे आप शोध करना चाहते हैं. So what the research problem in, that is the topic आप करना क्या चाहते हैं. State that problem clearly and completely. It means it facilitates to create the research questions or the objectives, and also to identify the points of your hypothesis. That is the problem of the research problem or statement of the problem, which we discuss later. Then subdivisions of those issues. प्रॉब्लम, यहाँ पे समस्या को यहाँ पे हम विषय या मुद्दे के रूप में लेते हैं. बट दिस इज द वे वी राइट in our research work or research project, research problem. Identify sub-problems, other issues. Completely researchable units, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. Divide them in small numbers, pieces, so that it may bring more clarity. And further, must be clearly tied to the interpretation of the data. जो आप तथ्य इकट्ठा किए हैं, उनका आपस में एक संवाद होना चाहिए, उनकी आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, so that it may look more systematic, and more systematic analysis of the collected data will give the fruitful results of your research. Am I audible? मैं सुना, मेरी आवाज आ रही सभी लोगों को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir, आवाज आ रही. Thank you. You reserve your questions, जो भी आपका डाउट हो, once I complete, okay, आप मुझसे पूछ सकते हैं, and I'll try to my best effort to satisfy your queries. Okay. Then come the definitional aspect. Define each technical term as it is used in relation to your research project. क्या क्या टेक्निकल तकनीकी शब्द कौन कौन से, उनको कैसे आप परिभाषित करेंगे, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या फुल फॉर्म का क्या होगा. So this will help as further see what is the purpose of the research at all. For us, mere taking a degree for the sake of the job or for our interest, but for others, maybe it may provide new insights, new knowledge. So your research work will further help to the other new coming researchers. Just like if you're a newcomer, a new researcher, you rely on the what has been already done in the fields. The good or bad, that is not your considerations. You are only restricted yourself to fact findings. ये तथ्य क्या है, क्या कह रहे हैं, पहले क्या था, अब क्या है, और दोनों में अंतर क्या है. What kind of changes that have taken, and what extent a particular social order of society has tried to adapt with the situation. Corona, it's not has brought the economic effect in the society, mental, social, physical, psychological. So one change which affected all the world in its myriad ways. कोरोना, कोविड-19 पैंडेमिक, राइट, किस तरीके से सिर्फ आर्थिक रूप से लोगों को प्रभावित नहीं किया, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक. So there are myriad ways, there are multi-dimensional approaches to understand the effect of COVID-19 pandemic
in the society. सो आपके पार्ट पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, किस एस्पेक्ट को लेना चाहते हैं, और उस एस्पेक्ट को आपको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, जिसका विस्तृत रूप से यू मे ट्राई टू स्टडी इट. So identification of your objectives in terms of definitional aspect of any particular research is quite essential, because it helps, as mentioned here, it helps remove significant ambiguity from the research itself by ensuring that reviewers, while they may not agree with your definitions, कि आपने क्या सही किया गलत, at least know what you are talking about, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या बात आप कर रहे हैं. Because agreement, disagreement, both are the part of a societal arrangement, just like society, the combination of both likenesses and differences. So you don't bother about that कि आपने जो काम किया है सही है गलत है. आपको बस ये दिखाना है कि what extent you yourself satisfied with your work and you have tried to justify your work, कि हमने जो किया है उसकी what I would like to say here, कि कितना वो कंक्रीट है या कितना सारगर्भित है, and how this is further going to help the people in the society so that a better environment may emerge at the layer of society, which will further help for the development of people or society at large. ये पर्पज है आपके उसको विस्तार में जाने, आपने जो भी जानकारी कर उसको कितना अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं. People may agree or disagree, that is the nature of the society itself. Okay. And to make it more researchable, you are supposed to be scientific in approach. साइंटिफिक अप्रोच की मेथड्स हैं, तरीके हैं, यानी जो भी आप एकत्रित करते हैं उसको जांचा जा सके, परखा जा सके, उसकी निश्चितता होनी चाहिए, सामान्यता होनी चाहिए. इट इज अ काइंड ऑफ सोशल फैक्ट, इन द वर्ड्स ऑफ इमाल दुर्खाइम, यानी जिसको सभी लोग जांच सकें, परख सकें, और जिस जो आपने शोध किया है उसके आधार पे क्या कोई भविष्यवाणी या कोई फर्दर प्रेडिक्शन किया सकता है कि हाँ ये जो सिचुएशन हमने पाई, इफ इट इज टू बी कंटिन्यूइंग, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, एंड देन हाउ लाइफ विल फर्दर एडेप्ट. फॉर एग्जांपल, नाउ व्हाट द टॉक इज गोइंग ऑन दैट कोरोना इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर, वी हैड टू एडेप्ट with the situations. So just like other common flu, it will also become a common flu, and people will develop a mode of adaptability to live with the corona. So that kind of prediction required in order to generate the social philosophy of that particular research work. Then come the research, what kind of methods we adopt, the way we collect and analyze data, method developed for acquiring trustworthy knowledge via reliable and valid procedures, different sources, and then systematic analysis of these data through the applicability of various tools and techniques of data collection. So this was the general understanding of what the research all about. Now coming to the next part of our topic, but before that, if we are going by that way, what the characteristics of a research? It should be objective based, value neutrality is required, precise, very people, parsimonious. As a researcher, the very important here for the research scholars who are participating in this, listening this lecture. Okay, parsimonious, kifayati, whether the prevailing circumstances or the conditions are quite suitable to you to enter the field where you want to do your research work or not. So feasibility of that is more important in terms of your economic,
in terms of your time, in terms of your living, in terms of the available infrastructure facilities. बहुत खर्चा आता है. It's not possible if you are not economically strong. बहुत टाइम टेकिंग है. Not possible. Because then, with the passage of time, you may lose your interest in your research. Then the final analysis may give the different results of your work. Being not able to concentrate on work as you have lost the interest, so आपके ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट हो जाएंगे. You may deviate wholeheartedly to yourself from the hypothesis. So किफायती मीनिंग यहाँ पे है कि आपको हर पक्ष को देखना है कि क्या पहुंच आपकी वहां तक है, फील्ड तक, कितना खर्चा आपका आएगा, whether you are in a situation that you can bear all that or not. Infrastructure facilities means the accessibility to the fields. इन सारी चीजों की जानकारी before going to the field is very, very important in order to do a concrete research work. Other, it will be better in the prior yourself that you leave the field, you select another field as part of your research work. Logical, probabilistic related to, and then the variables through which we try to interpret our data. Okay. Now coming to the second part, what is important for us, and the topic which has been given to me by Dr. Abha Singh, where I am supposed to discuss in detail, having my own field experiences. Okay. So what the synopsis is all about, what the various components of the synopsis, giving some sort of definitional aspect here. I would definitely focus to how to go for synopsis making, how to frame the synopsis, a brief outline of your future work, a brief outline of your research project, a brief outline of your project in the class. For example, here in Live Bhopal, every student is supposed to do a research project on a particular subject which we are teaching. So if there are 4 subjects. For 4 subjects, you have to submit 4 projects. Before the submission of those 4 projects, for each subject, each student is supposed to give a brief outline of the work to be done. That is what we call the synopsis. जिसको आप सार संक्षेप बोलते हैं. रिसर्च सिनॉप्सिस मीन शोध संक्षेप, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, and then you go for further your detailed work, applying the method of, as I mentioned earlier in lecture, doctrinal method of data collection or non-doctrinal method of data collection. So synopsis become the one of the basis through which you enter in the field. This is just like a design. आप घर बनाते हैं, घर के पहले डिजाइन को शेप में लाते हैं कि यहाँ पे ये रूम बनेगा, ये मास्टर रूम होगा, ये रूम होगा, ये डाइनिंग रूम होगा. ओके, उसका शेप बाद में छोटा है, बड़ा हो सकता है, बट यू क्रिएट डिजाइन, model or sample or other way. So synopsis is nothing but a statement of well formulated research problems, that how you are going for your detailed work. So you give the brief of various structural as well as the organizational component of your would-be future work in this work, what you call the synopsis. Maybe 1 page, maybe 2 pages, maybe 13 or 14 pages, but it not requires about 30 pages or 40 pages. Okay, so synopsis is nothing. Now question may come in your mind or may arise, what is all about? What is the goodness of a synopsis writing and why we need a synopsis? Okay, then what are various those headings or subheadings or other components which constitute that major work of research problem to be done. Statement of the problem.
सिनॉप्सिस में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या करना, क्या क्या उसमें लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या, एंड हाउ फर्दर गो फॉर दैट. So statement of problem, the first step in any scientific research process is precise formulation of the question to be investigated. Many of us, the research scholars, even the faculty members who are the researchers, most of the time we miss or we fail to ourselves to understand the difference between the statement of the problem or objective of the study or the hypothesis. All these three are quite different. Statement of the problem is something different, objective is something different, and hypothesis is also something different. Statement of the problem is the combination of your both objective and hypothesis in one way. That what ultimate you want to do, where you are going to emphasize as part of your whole work. For example, your main topic is a systematic analysis of the process of modernization on kinship system. So मेन emphasis क्या है, आपको नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करना है कि जो आधुनिकीकरण है आज नातेदारी व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है. So you are not supposed to deviate during whole course of your research work, either directly or indirectly, to gather data on various dimensions of the society, which again directly or indirectly affecting the kinship system. जोर किस पे देना है पूरे शोध के दौरान कि आपको नातेदारी व्यवस्था को देखना है. अब नातेदारी व्यवस्था को कैसे कौन से स्रोत किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उन सबको भी आपको नातेदारी के व्यवस्था के संदर्भ में ही देखना है. This become the basis of writing the statement of the problem. It means the core issues. That difference is a precise formulation of the question to be investigated. So here, what is the question to be investigated? Kinship system, the main focus. So must be very clear what the meaning of the statement of the problem and how this is different from writing of the objectives or hypothesis or hypothesis. Okay. Thus, the central task involved in problem formulation is that of framing the terms of inquiry. Terms of inquiry क्या है? The example which I have given here, that is the kinship system. How the process of modernization in its myriad ways has affected the traditional order of kinship system. वो फिर आपको उसको रिलेट करना है, लेकिन रिलेट किसके संदर्भ में करना है? kinship system के संदर्भ में. That is the meaning of the statement, the problem in a research work, which become the part of synopsis writing. Okay. Thus, see here, the specific terms of inquiry may be formulated either in terms of research questions or guiding hypothesis. Okay. Hypothesis you may take as, you all are quite aware about, the level of, for example, the kind of the hypothesis you may take, the level of education is positively related to modernity. The higher, the greater the modernity. So why we take the hypothesis? प्राकल्पना को हम क्यों लेते हैं? Further, you may ask whether it is necessary to have the hypothesis in every kind of the research work. Not at all. Okay. If your research is more exploratory in nature, you are not supposed to take the hypothetical points of your research, because where you are deliberately going to do to try to are going to find out something new, you are going to explore. So in case of exploratory research work, it's not necessary to have the hypothesis. And then you may try to relate whether the education and modernity both are interrelated or vice versa, or both are different. Some other notions of the example that the practice of untouchable Indian villages had declined because of the legal prohibitions, it can be categorized as hypothesis. जो अस्पृश्यता की प्रथा थी या जो व्यवस्था थी, वो जो कानूनी
प्रावधान आए, कानूनी जो रोकें दी गई उनके अनुसार वो घटी. You may prove or disprove after your further analysis as part of research. Then you may, in findings, you may mention this: yes, I have tried to test my hypothesis, I have failed, or I have succeeded. For example, as a student of anthropology and sociology, I myself say that no, it's not because of legal prohibitions or SC/ST Act the other way or Article 70 of the Indian Constitution, but there are other factors which are quite responsible or more than the legal arrangements to reduce this notion of untouchability among different caste groups in India. That factors may be employment, political decentralization, working, living in the cities, maybe. But even while doing research, I or you, as a research person, are not supposed to pose these issues to your respondents. कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कानूनी प्रावधान नहीं, बाकी जो चीजें हैं, व्हाट आई जस्ट ट्राई टू मेंशन हियर, इनकी वजह से अस्पष्टता में कमी आई है या अस्पष्टता नहीं दिख जाती है. नो, नॉट एट ऑल. आपको वैल्यू लेट द आंसर कम फ्रॉम देयर साइड्स. फॉर द पीपल whom we are studying, whom we are researching, what the observation they have in their minds, and you as a researcher just try to note down. जो भी अच्छा है बुरा आपको फील्ड से मिलता है सब कुछ लिखिए. गाली भी आपको कोई देता है, बिकॉज आई लिसन ड्यूरिंग माय फील्ड वर्क इन द अमंग द थारूज एंड आल्सो वन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूएनडीपी, भील भिलालन झाबुआन छिंदवाड़ा हियर इन एमपी. गालियां भी कहीं ना कहीं मिली हैं. आपको लिखना है, आपको बताना है. द कॉन्स्टेंट्स इन द फील्ड और माई स्टोरी इन द फील्ड कि क्या फील्ड के अनुभव रहे. As part of synopsis, the title, very important aspect of your research. The direction of topic must be very, very clear in order to generate the work. Otherwise, most of the time, it also creates the problem. Some of the examples I try to mention here: that kinship in professional relations, a study of North Indian district lawyers. But the country where we live, if you criticize any judgment delivered by the apex courts, it may bring you in trouble that you have done the contempt of the court. आपने कोर्ट की डिसीजन की अवहेलना की है. So you have no right as citizen of this country to comment on the decision of the apex courts because they are considered as the god. But situation in other countries quite different. But a single person, single individual, any citizen of that country has every right to criticize the judgment of the Supreme Court or High Court. In the sense, criticize means here that to express your own views, what extent you are agree or disagree, because judges are also the human beings. ऊपर से नहीं आए हैं, so they may be biased. Because India, no systematic study has been done. What is the sociology of judiciary? What is the sociology of law of judiciary? How judicial system becomes functional? कैसे काम करता है, कैसे जाति, भाषा, धर्म डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है. क्यों तिवारी जी तिवारी वकील को करना चाहते हैं, क्यों ठाकुर साहब ठाकुर वकील को ही करना चाहते हैं, क्यों एक धर्म विशेष का व्यक्ति धर्म विशेष के वकील को करना चाहता है. एंड हाउ दिस choices of considerations are further affecting the final decision making in the courts. That kind of systematic study has not been done so far in detail. So title is supposed to be more specific, more broader. Okay. Now this is the way we go for the synopsis. But before that, as a researcher, आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि हम क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें, so that we may be or I may be in a position to complete my task. यानी जो हम शोध करना चाहते हैं उसको हम अच्छे तरीके से कर लें. ओके. सो फर्स्ट
What is the main? That is the title of the, that does the topic, the subject of study, the physical area where the inquiry will be carried out really interest them, whether you like this or not like this, or you have been forced by your research supervisor or other faculty members, no, आप यहीं पे जाइए, यहीं करिए, so आपको भारत रत्न मिल जाएगा. Not at all. Your own interest is equally important or more important than others' interests. The ultimate, you have to go to the fields. It's not the supervisor who sometime 1 or 2 occasions or 3 occasions may visit field with you. Most of the time, you are supposed to do the work. Because the supervisors are mere facilitator. They are not the researchers. You are the researchers. So the subject of study, the physical area जहां पे आप लेना चाहते हैं, उसकी surroundings कैसी है, whether it is give a conducive atmosphere to you or not. You are supposed to be very serious in the beginning of your research work. First, second one, is this problem enable to scientific investigation? क्या कोई वैज्ञानिक जो जांच हम करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या इसकी वैज्ञानिकता कहां तक सही रहेगी जो है. Okay, so objectivity is more important in selection of a particular topic. Do they have adequate resources to investigate this topic? The questions of funding and time figure as part of the characteristics of research I mentioned there. That is the parsimonious. Will the research questions or the methods and techniques that are being used lead to unreasonable ethical problems? If that is, better to leave that area or people in the beginning. Don't give second thought to go and then we'll see. Better not. If this is going to create unnecessary controversies. Does the topic have any theoretical interest? Because the purpose of any research is to evolve the theory, but it's not always the same case. Sometimes also to test the already existing theories. Okay, so what extent that topic is theoretically interest or useful, these are some of the questions which as a researcher you are supposed to ask yourself before planning for the research or topic, and then you are supposed to provide a systematic analysis, what we call the synopsis. अब आपका core part आया, synopsis क्या है? Can I have some 20 minutes, Dr. Abha ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can. I think we can take 15 minutes, sir. क्योंकि 12:45 से फिर discussion के लिए हम लोग के पास समय रहेगा. Sure. Because this is just already some of things I already mentioned. But आप synopsis कैसे बनाएंगे? क्या आप brief जो करते हैं outline for your research work, that is the planning process. How you are going further for your detailed work. So some of the indications in terms of patterning of making the synopsis or brief outline of your future detailed work. Beginning from the title as already mentioned, then as part of that title, certain characteristics are the part of which are supposed to be mentioned as part of your research synopsis. जिसको आप शोध सार कहते हैं. Background or introduction. Brief about your work. Why you are interested to study this? Need for the study. Then review of related literature. आपने जो समस्या लिया है. Again, I'm using the word because in the field of social science research, we use the term problem. उस समस्या पे हो सकता है और अक्सर होता भी है कि पहले से कुछ न कुछ काम किया जा चुका होगा जो है, or something in related fields. So here you are supposed to be more serious so that you will also be in a position to understand the lacunage in earlier researches. यानी जो पहले से रिसर्च हुई उसमें क्या दिक्कतें थी, क्या कमियां थी, उनको आप अपनी रिसर्च के दौरान दूर करने की कोशिश करें. दूर इन द सेंस उनको आप और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करें. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर मीन्स जब आप विभिन्न स्रोतों से कुछ पहले स्टडी हो चुकी उसको जो बताने का प्रयास करते हैं, एट द बेसिस ऑफ विच
यू राइट द फुट नोट्स और इन नोट्स, या जिसको आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं, कि आप, और वो विभिन्न सोर्सेज हो सकते हैं, सोर्सेज जर्नल्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, बुक्स. नाउ इन द era of digital era, where everything is helping from the Google Maharaj, I also taken this from Google Maharaj. Okay, so how this is helping, that is also supposed to be explained thoroughly in the beginning as part of literature review, and this shows your own strength and seriousness on the topic, कि आपने कितने स्रोतों से अपने नॉलेज को जानने की कोशिश की है, कि इस प्रॉब्लम जिसको आपने लिया है इससे पहले से कुछ ना कुछ काम हो चुका है, एंड हाउ दीज work whom you already studied and noted as part of your synopsis here in the beginning, it will become more detailed in case of your major research work thesis part. आपने क्या प्रयास किया, that shows your own seriousness and strength of learning. Objectives of the study, क्या करना चाहते हैं, there's supposed to be 4 or 5 points or 10 points depending the nature, not supposed to be 20 or 30 points. Remember this, कि आप 10 या 15 20 पॉइंट्स लिखते चले गए, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. यू आर सपोज्ड टू बी मोर प्रिसाइज इन योर अप्रोच फॉर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च वर्क, कि आपके शोध के उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, और यहां पे करना चाहते से बेहतर है व्हाट रियली यू वांट टू नो. सो ऑब्जेक्टिव आर मोर आर सपोज्ड मोर ओरिएंटेड अबाउट नोइंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो शोध के ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, वेरिफिएबल ऑफ स्टडी, पैरामीटर्स ऑफ द स्टडी, क्या मोड आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस को टर्म्स होंगे, उनकी आपको उनको आपको व्यवस्थित तरीके से बताना होगा, क्या इसका मतलब ये होता है. ओके, सो डिफरेंशियल एस्पेक्ट इज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी क्लियर, जो आप फाइंडिंग्स में आपको फर्दर हेल्प करती हैं. देन कम द हाइपोथेसिस, जो आप एज ए पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस मेंशन करते हैं. एजम्पशन मीन्स कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, यू विल बी इन ए पोजीशन टू नो दिस और टू राइट दिस आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च वर्क एंड इन योर फाइनल एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, वेदर यू हैव प्रूव्ड योर हाइपोथेसिस व्हिच यू हैव टेकन एज पार्ट ऑफ योर रिसर्च, और you have deviated or you have failed to prove your hypothesis. Okay, design of the study techniques used through which you collect the data, questionnaire, interview, schedule, observation, etc. Okay, sampling techniques, आपका क्षेत्र क्या है, कितना किस तरीके से उस क्षेत्र के लोगों को ये जानना आप चाहते हैं, and there are various types of sampling which you try to use as part of research. So there is no fixed criteria, depend on the kind of research work you have taken your in hand and the feasibility of the field work. उस accordingly आप sampling को लेते हैं. Tools for collecting the data, again what the method you are applying. Validation procedures, कैसे तथ्यों की आप जांच करेंगे. फील्ड वर्क एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड वर्क डिटेल्स, जो आपको फील्ड में मिला उसको आप फर्दर कैसे करते हैं. देन कम द टूल्स फॉर एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, मोर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन गिविंग द फाइनल शेप टू योर कलेक्टेड डेटा. Even in the field of sociology, anthropology, people type, but more important in the field of economics or other sciences where you use the statistical techniques for identification and analysis of the final data. So that depends कि आप कितना statistical tools को apply करना चाहते हैं as part of your interpretation of collected data. There are no fixed criteria. Then come the findings, discussions, further suggestions कि आपने जो पाया और यदि ऐसा इसमें सुधार किया जाए तो how this is going to help. That why, for example, that why even today majority of the tribal population of this country in their day-to-day affairs still prefer to resolve their issues by means of informal mechanism rather than approaching to police and judiciary.
The formal system says if any dispute arises, if any conflict is there, we are not supposed to resolve grievances or disputes at the level of the society. For that purpose, there is a mechanism established by due procedure of law. वो मैकेनिज्म क्या है? पुलिस और कोर्ट है. लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं, यू एज ए रिसर्चर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर दोज पॉइंट्स or phenomena that compel people or people themselves willing to resolve their issues rather than approaching to the court. ये क्यों लोग अपने स्तर पे ही चीजों को निपटाना चाहते हैं, कोर्ट की मदद लेना? Because in many of these cases it has been seen that even if something has been reported to courts, unless or until people are not resolving their issues, there are more chances of conflicting situation further. What I come across during my field work among the Bhils of Mount Abu and even here as part of the Bhils, Bilalar, Goon, Bharia tribes in the state of Madhya Pradesh. कि पुलिस में भी केस गया, लेकिन जब तक समाज के स्तर पे केस को नहीं निपटा गया, रिवेंज के चांसेस ज्यादातर रहते हैं. तो एज ए रिसर्चर यू आर सपोर्ट टू बी वेरी सिंसियर ऑब्जर्वर इन सच थिंग्स. दैट मे हेल्प कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा तो इस डेफिनेटली व्हिच विल हैव तो रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च, बिकॉज नो रिसर्च इज कंप्लीट, इट हैज ऑलवेज चांस टू बी रिसर्च एंड दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड रिसर्च. यानी कोई भी जो हम काम करते हैं पूर्ण नहीं होता, उससे हमेशा कोई ना कोई कमी या और संभावना रहती है कि किसको और पूर्ण तरीके से देखा जा सके. लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, सीमाएं क्या है, कांस्टेंट क्या है? इकोनॉमिक कांस्टेंट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कांस्टेंट हो सकता है, फिजिबिलिटी कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी कांस्टेंट हो सकता है. सो यू आर सपोर्ट टू मेंशन कि शोध की अपनी सीमाएं थी, या टाइम कांस्टेंट हो सकता है, दैट यू आर सपोर्ट टू मेंशन इन ए वेरी क्लियर कट वे. एंड देन कम द कंक्लूजन्स एंड इफ द फर्दर चैप्टराइजेशंस दैट यू आर आल्सो सपोर्ट टू गिव एज पार्ट ऑफ योर सिनॉप्सिस इन द बिगिनिंग. ये जो शोध हम करने जा रहे हैं, इसको हमने कई सब पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड पार्ट को हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में ले लिया. रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम एरिया ऑफ स्टडी और सारे कंटेंट्स को लेंगे. सी व्हेन इट इज मेंशन्ड द ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी ऑफ पैरामीटर ऑफ स्टडी, आपको रिसर्च एरिया क्या है उसका ब्रीफ डिस्कशन देना पड़ेगा, पीपल क्या है, पॉपुलेशन प्रोफाइल क्या है, आपको उसमें बहुत सी चीजों को लिखना पड़ता है. आई एम गिविंग जस्ट ए ब्रीफ एंड जनरलाइज स्ट्रक्चर हाउ टू गो फॉर द सिनॉप्सिस मेकिंग हियर. लेकिन एरिया ऑफ स्टडी क्या है, सैंपल साइज क्या है, सैंपलिंग की टेक्निक आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट यू आर सपोर्ट टू राइट एज पार्ट ऑफ योर सिनॉप्सिस. फिर चैप्टराइजेशन लास्ट में लिखते हैं. यदि आपको लगता है कि आप क्या क्या चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर आप क्या लिखेंगे थर्ड में, तो दैट यू आर आल्सो सपोर्ट टू मेंशन एज पार्ट ऑफ योर research synopsis, and then come the bibliography or references. And this also should be in a patterned way, not in hazard way. Patterned means what kind of the style of writing bibliography or references you are adopting. In the field of the law, generally it is cited as the blue book citations or Oscola. Here in field of general social science, we say about the MLA style of writing or APA style of writing. Okay, so there you also supposed to be very, very specific in your approach of writing the synopsis. Coming on just, I think, 2 or 3 more slides, not more than. So that was the brief outline of a major work, what we call the synopsis and what it contains all about. इसके अंदर हम क्या क्या लिखना चाहते हैं, क्या क्या हम बताना चाहते हैं. अब आप आते हैं फाइनल, आप प्लानिंग करते हैं कैसे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है. उसकी एक जनरल स्टैंडिंग है जो आपको फर्दर फील्ड में हेल्प करती है. प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट रिसर्च टॉपिक, वो कैसे आपको आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आएगा. प्रिकॉशन इन द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिजिबिलिटी जो हमने चीजें बताई वो आपको काम करेगी. प्रिकॉशंस इन डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, कि क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए.
नेसेसिटी फॉर डिफाइनिंग द यूनिट्स ऑफ रिसर्च, क्यों हम चीजों को बांटते हैं रिसर्च की जो प्लान प्रोसेस ने बनाया है उसमें हर कंपोनेंट्स को हाउ वी फर्दर डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स, बिकॉज इट हेल्प्स अस लॉट in the final analysis of our data. Otherwise, what will happen if your initial framing of the research plan is not good and not pattern, eventually it will create problem in the final analysis or interpretation of your data. So necessity for defining the units of research is one of the essential component in the beginning of your research plan. Selection of method, क्यों select करें? For example, I selected 4 villages of the Lakhimpur district dominated by the Tharu tribals. And then I have given the criteria कि हमने अगर निजोटा को लिया तो निजोटा विलेज को हमने क्यों लिया, मसानखम को लिया, देवराहिक लिया, ओके. Then other villages, if I have selected, why I have tried to select other villages, 4 or 3 villages. उन विलेज को क्राइटेरिया आपका क्या है, whether the population criteria or maybe a particular village is very near to the urban areas. So behavioral patterns of this village which is near to urban areas will be quite different from the behavioral patterns of a village which is far away from the urban areas. So जो selection of method है, किस फील्ड को कर, उसको आपको क्लियरली बताना है कि आप अगर इस क्षेत्र को ले रहे हैं, why you have the interest, आपको बताना है. एक गांव को ले रहे हैं, why this particular village, 10 गांव को ले रहे हैं, why 10 villages, 20 को ले रहे हैं, why 20 villages, 100 sample size, why. So clarity is required at each and every step of your research formulation. ठीक. आइडिया अबाउट पायलट स्टडी इन प्री टेस्टिंग, यदि आपको लगता है कि लिमिटेशन या कांस्टेंट्स हैं, सम टाइम इट इज आल्सो एडवाइजेबल बाय द सुपरवाइजर, बाय द रिसर्च इन द मोस्ट इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क दैट यू गो फॉर द पायलट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग. आप फील्ड को पहले से विजिट कर लीजिए. यू गो देयर, लिव फॉर 1 day, 2 days, 3 days or 10 days, and if you think that this field is not going to create problem for you, stay here, and definitely you will succeed in your aim for the purpose which you have arrived here. Then only you are supposed to go for the further research work. Otherwise, it will be better to you and your team, if anyone is there, to come back and select the other field of your research work. तो पायलट स्टडी यानी जब पहले फील्ड पे जाके जांचने की कोशिश करते हैं कि हमको कितना ये सहूलियत देगी, कितना देगा, देन दिस हेल्प. टाइम एस्टीमेट एंड कास्ट एस्टीमेट. कास्ट मीन्स इकोनॉमिक, टाइम एस्टीमेट कितना टाइम लगेगा जो डेटा हम चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने. एंड डिपेंडिंग द नेचर ऑफ रिसर्च वर्क, whether it is synchronic kind of study or diachronic kind of study, you may proceed for your field work. So ये precautionary measures हैं which you are supposed to adopt in the beginning of your research planning so that it may become quite helpful in your future research work or for the field which you have chosen. Okay. Then selection and training of personnel, key informants, मुख्य सूचनादाता. हर एरिया में, हर फील्ड में कुछ लोग व्यक्ति होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी होती है. ऐसे लोगों की यू सपोर्ट टू मेक डायरी, ओके, who will give you maximum information related to your field. Then the research administration, the team, and finally to get oneself ready. Yes, अब हम ready हैं, हम अब फील्ड में जा सकते हैं. So mentally you are supposed to prepare yourself on such issues, on these 10 points as mentioned here, and then finally you may enter in your fields for the purpose which you are going. Okay, so this is, then come the literature already mentioned. Finally report writing. जब आप पूरा तथ्य संकलन करते हैं, दिस नॉट द पार्ट ऑफ द सिनॉप्सिस, दिस अ पार्ट ऑफ योर डिटेल्ड वर्क. कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, ये इसकी बेसिस होती है जिसको फर्दर आप सिनॉप्सिस को और इनलार्ज करते हो.
देखिए जो इसमें दिया हुआ है वो उसका ब्रीफ पार्ट है, यहाँ उसी को आपको डिटेल करना है. दैट बिकम द बेसिस ऑफ योर डिटेल्ड रिसर्च वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट्स. इंट्रोडक्शन क्वाइट ब्रीफ एज पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस, बट हियर इन डिटेल. Concise and clear-cut statement at the nature of the study, student problem, something more, aims very clearly defined, sources of information, more way of using the techniques of data collections as part of your major research work. वहां पे जस्ट आप लिखते हैं, यहाँ पे आपको उसको एलिबोरेट करना है. स्कोप ऑफ स्टडी वहां पे भी लिखते हैं, यहाँ पे जब दोबारा लिखेंगे पार्ट ऑफ डिटेल वर्क, यू मे हैव सम कांस्टेंट्स, लिमिट्स और अदर सम इथिकल इश्यूज जो आपकी स्टडी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. यू आर सपोर्ट टू स्पेसिफाई दैट इज इवन इन डिटेल योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, योर पर्सनल प्रॉब्लम्स इफ यू हैव फेस्ड एनीवे एज पार्ट ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ योर रिसर्च work. Then come the brief statement of working hypothesis which guided the study. As points, you're taken hypothesis number 1 or number 2 as part of synopsis. Here you are supposed to testify those points through the help of your collected data. Okay. Then come the brief statement techniques followed in the study. Brief description of experimental treatment of data and techniques used in experiments, more detailed. Major findings of the study, major conclusions reached about findings, कि आपने क्या पाया, क्या बताना चाहते हैं और क्या फर्दर सजेशन है, जो सिनॉप्सिस में आपने देखा होगा. यहाँ पे आपको उसको डिटेल करना है या एक्सप्लेनेटरी वे में आपको लिखना है. एंड लास्ट कम्स एनीथिंग दैट कम एंड दैट यू फाइंड समथिंग यूनिक. ओके, देन एनेक्जर भी आपको लगाना है. एनेक्जर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर और शेड्यूल or the maps of the area, okay, that you are supposed to mention at last. So special remarks here like problems encountered in gathering the data, classifying them and analyzing them, core issues of research field, possible discrepancies in data collected. क्योंकि most of the time what we have seen कि आप किसी व्यक्ति विशेष से पूछने या ग्रुप से पूछने गए, if you have not developed a proper report, यदि आपने अच्छे संबंध नहीं बनाए तो अक्सर जो आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी कम मिलती है और जो आप नहीं जानना चाहते हैं उसकी जानकारी ज्यादा मिलती है. और उसमें जो तथ्य हैं उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन हो जाता है कि उनकी कितना सही है. जिस व्यक्ति से आप व्यक्तियों से आपने पूछा कितना सही है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलता है कि रीचेक करें कि उसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के दोबारा पूछें. दो that becomes good if you have the time कि उसको आप वेरीफाई करें. So verifiability is also one of the character of a scientific research, and being scientific means it's not the life sciences or the physical sciences, even how we apply those methods to understand the human nature, which is so complex. So it is too difficult to understand any society in its nutshell, but it's not that much difficult to understand society if 90% or 80%. कि आप बहुत कुछ जान सकते हैं यदि समाज के साथ आप रहने लगे हैं या उनसे एक रिपोर्ट आप बना लिया है. एंड दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग नियर टू nutshell or near to what is a perfection is known to apply the scientific method that depends the psyche, mental constitution and the availability what you have as a being in the society. तो बहुत कुछ डेटा कैसे किससे पूछना है, क्या उसके ट्रुथ को पता करना है, आपकी अपने पर्सनल स्टाइल पे डिपेंड करता है. Then come the suggestion to subsequent investigators on same topics in the same context. And last आपको बिब्लियोग्राफी देनी होती है. ओके, और उसका एक आर्डर होता है कैसे आपको लेना है. यहाँ पे आर्डर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ सजेस्टेड रीडिंग्स है. They are the some of the books which help you to gain more insight about the research. So what I would like to advise to all the students here, यदि आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो कुछ बुक्स को पहले पढ़ें, देखें कैसे मेथड अडॉप्ट किए, फील्ड में क्या क्या दिक्कतें आती हैं. जब मैं थारू में गया तो कई जगह गाली सुनने मिली, जैसे बंदिया वन ऑफ द विलेज
aged person 80 years started abusing you outsiders, and some of you might be aware about the whole center belt of the tribal India. They use the word Diku for the outsiders. Diku means decades. कि we very simple people, or we are simple people because of their interest and interference in our day-to-day affairs. They became rich and we became poorer to poorer day by day. So they don't like your presence. तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो रिपोर्ट करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, वो आपको अक्सर गवर्नमेंट का आदमी समझ लेते हैं और गवर्नमेंट में उनकी यू आर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, उनको लगता है आपको स्कीम या प्रोग्राम लेकर के आए. सो यू हैव टू clarify everything in the beginning कि for the purpose which you are here, you are not the government personnel, otherwise you will not get the concrete information. So this is required. And then again we come, I mentioned, no research is complete, it always has the scope to be researched. So thanks for your patience listening lecture. Okay, और उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी. थैंक यू सर, थैंक यू सर. मैं अब स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि आप में से जिनकी भी क्वेरीज हो प्लीज आप सर से डिस्कस कर सकते हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं से चर्चा हुई. तो आप में से जो लोग पूछना चाहते हैं वो कृपया सर से निसंकोच भाव से प्रश्न कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड आफ्टरनून. Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर है. जी. आपने थोड़ा सा बताया था उसके बारे में. सो सर आई जस्ट वांट टू आस्क दैट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इफ सम अमाउंट ऑफ वर्क हैव बीन डन बट अ पर्टिकुलर सेक्शन और एन एस्पेक्ट हैज बीन लेफ्ट और उस पर मैं काम कर रहा हूं, सो how to develop that holistic approach on that particular section, उस पर किस तरीके से काम करना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन छूटा हुआ है उस पे एक होलिस्टिक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दोनों ही डेवलप हो सके. Sure. Avnish Pandey, I Yes, got sir. your question, dear. Okay, what you are supposed to do? आप होलिस्टिक की बात करते हैं. किसी चीज को होलिस्टिक हम कब कहते हैं? जब उसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करते हैं. यानी वी हैव टू अडॉप्ट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड दैट सोशल फिनोमेना एट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. अब वो जो आपने उसको एक्सप्लोरेटरी बात की, यानी आप उसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं. अब आप ढूंढो कैसे, अगर उससे वो ढूंढने वाली चीज बाकी चीजों को कैसे अफेक्ट कर रही है, जिसको आप होलिस्टिक बात करें, तो उस कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ेगा. यानी यू आर सपोज टू बी मोर क्वालिटेटिव इन योर अप्रोच टू स्टडी दैट फिनोमेना रादर देन द क्वांटिटेटिव. आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर चीज छूट रही है वो कैसे अन्य चीजों से अफेक्ट हो रही है या अन्य चीजों खुद को अफेक्ट कर रही है. तो डिपेंडिंग द नेचर, सिंस इफ यू टेल योर टॉपिक देन आई मे बी इन माय more good position. Sir, actually I've been working on self-reliance and self-sufficiency in military aviation in Indian aerospace industry. Right. So I thought while I was reading, sir, तो मुझे, मैं जब भी कुछ रीड करता हूँ, there are a lot of things which come in my mind. और मुझे ऐसा लगता है कि I have to refine it again and again. See, somewhere you have to stop yourself as well. Yes, आप जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है. समुद्र है या ओशियन आप कह सकते हैं, महासागर है, चीजें जो है, राइट. आपको आपकी सुटेबिलिटी यानी जो टाइम फ्रेम आपने लिया है अपने वर्क के लिए और वर्क से डायरेक्टली कितना वो चीजें आपको काम करेंगी, आपको उतने ही कंपोनेंट को करते हुए अपने वर्क को आगे बढ़ाना है. बिकॉज टू मच लर्निंग समटाइम आल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम. द कंपाइलेशन कि क्या ले क्या नहीं ले, आपको लगता है ये भी ले लेना चाहिए वो भी ले लेना चाहिए. नो, दैट इज नॉट योर टास्क. जो मोर रिलेवेंट है और विच विल हेल्प यू टू योर रिसर्च वर्क एंड विच विल इवॉल्व न्यू इनसाइट, आपको वहां पे जोर देना है, ना कि सब पे जोर देना है. आपको वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद योर सुपरवाइजर, राइट, कि हाँ ये एरिया है, अगर इसको करें तो इस एविएशन की फील्ड में फर्दर क्या चेंजेज आ सकते हैं, जो चेंजेज
इस फील्ड को आगे ले जाएंगे। आगे मीन्स डेवलपमेंटल चेंजेज की बात करनी है आपको, ये नहीं डेट्रीमेंटल चेंजेस की बात नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या रिसर्च लिया है, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन सब कुछ पढ़ने का सब कुछ आपको लिखना नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक, आपको Yes, sir. लिखना उतने हैं विच इज मोर इम्पॉर्टेंट एट पार्ट ऑफ योर टॉपिक एंड मोर स्पेसिफिक इन योर अप्रोच। टॉपिक से साथ साथ आपका टॉपिक का पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ना, जो आप करना चाहते हो एविएशन की फील्ड में। Yes, वो sir. क्या रिलेवेंट है, यू आर सपोज टू रिलाई ऑन दैट रादर देन थिंकिंग और टॉकिंग एवरीथिंग। Yes, sir. Okay, thank you, sir. गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर एक क्वेश्चन था सर, रिपोर्ट राइटिंग हम कब करते हैं सर? सिनॉप्सिस बनाने के बाद करते हैं या जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग? देखिए सिनॉप्सिस क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस। सिनॉप्सिस जो होता है, आप जो कुछ करना चाहते हो आप फिर बताते हैं कि हम ये करेंगे। जी। I give the example of the house. Before the construction of house, आज आप उसका एक लेआउट बनाते हैं जी। कि यहाँ पे कमरा होगा। तो सिनॉप्सिस क्या है, वो लेआउट है जी। कि हम अपनी रिसर्च में क्या क्या चीजें रखेंगे और उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो फाइनल फेज होता है। आपने सिनॉप्सिस बनाई, फिर आप फील्ड में गए। जी। वो जो नेचर आप है, आप केस स्टडी मेथड लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल एनालिसिस करना चाहते हैं, या ग्रुप एनालिसिस है, या जस्ट फील्ड वर्क में जाना चाहते हैं, फिर आप केस, इट वेरीज। जी। क्राइटेरिया ओनली आइडेंटिफाइड टू यू एज ए रिसर्चर एंड योर सुपरवाइजर, जो उन्हें आपको बताया है। बाकी एज एन आउटसाइडर आई कांट से एनीथिंग। नंबर रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है जब आप सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं जी। अपनी फील्ड से इन द ट्यून ऑफ योर सिनॉप्सिस में जो आपने लिखा है। जी। सब कुछ इकट्ठा करने का मतलब नहीं जो आपसे रिलेटेड भी नहीं उसको भी आपने इकट्ठा कर लिया। दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड। सी, रिसर्च इज ए वेरी पैशनेट एंड सिंसियर वर्क। आपको सब कूड़ा नहीं इकट्ठा करना, आपको वो इकट्ठा करना है विच इज मोर रिलेवेंट। उसको इकट्ठा करने के बाद जब उसको आप पैटर्निंग करते हैं या आप ऑर्डर में क्या आपकी फाइंडिंग रही, क्या सजेशन है, जो लास्ट में बताया था अभी आपको, वो उसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का फाइनल फेज ऑफ योर डेटा collection through which you try to analyze, interpret, elaborate or explain your collected data in the light of your objectives, hypothesis, research design, sampling, etc. Right? सर स्पेशल रिमार्क्स जो होते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है डेटा गैदरिंग में या जो डिस्क्रिपेंसीज हैं सर, वो रिपोर्ट राइटिंग के ही अंदर लिखते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यू मे गिव सब चैप्टर्स सब in one of your chapter of analysis my experiences during the field work। फील्ड वर्क के दौरान हमें क्या क्या पता चला, क्या क्या चीजें रही, यू कैन मेंशन कि हमारी दिक्कतें क्या रही, बिकॉज सो दैट मे बी हेल्पफुल। मैं पहले दिन गया था वहां पे, तो आई एम ए नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर, ना मैं दारू पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, दो आई हैव द टोल हिज हॉस्टल लाइफ। तो पहले दिन जिस पधना द ट्रेडिशनल विलेज हेड ऑफ द थारू ट्राइबल पीपल, ओके जी। वो जिस रूम में मुझे वहां पे रुकने को कहा गया, दैट रूम वाज फुल ऑफ दिस पेट्रोल एंड डीजल ड्रम्स। ठीक है, मुझे रात में 2:30 पे वोमिटिंग शुरू हो गई। इन माय केस नो फैमिली मेंबर्स ऑफ माइन वाज अवेयर अबाउट कि इन विच पर्टिकुलर विलेज और विलेजेज आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई स्टडी। दे वर ओनली अवेयर कि मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, वहां थारू पे मैं स्टडी रिसर्च करने जा रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था मैं किस गांव में जा रहा हूँ। सो आई थॉट कि अरे अब तो यहाँ सब कुछ मेरा काम तमाम पहले दिन हो जाएगा, रिसर्च तो बाद में होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आते हैं तो और दूसरे दिन उन्होंने मुझे शिफ्ट किया नेक्स्ट रूम में, और बहुत से इश्यूज आए, सीइंग द पॉसिबल टाइम नॉट पॉसिबल टू डिटेल, बट दिस हेल्प्स यू। ये आपका एक्सपीरियंस होता है जो फर्दर फ्यूचर रिसर्च में आपके लिए बहुत काम आता है, बाकी लोग काम आता है। वो हो सकता है उन चीजों को पहले समझ लें और अवॉइड करें। ठीक है, नॉट एंड फर्दर यू आर नॉट आल्सो सपोज्ड टू आस्क एनी डायरेक्ट क्वेश्चन इफ दैट इज वेरी सेंसिटिव और दैट मे affect your cardiac relations with the respondents. So research is itself style. Asking the question depend on your own personality. Right? Okay, sir. Thank you.
सर मैं दिवाकर पटेल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो जो हमने 5 पॉइंट्स रिसर्च के लिए अपने आप से पूछने के लिए बात हुई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फंडिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस। जी सर जैसा कि आपने बताया कि आपने एनडीपी से भी फंड्स लिए हुए थे, तो मतलब प्रोजेक्ट किया हुआ। सर तो एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है सर, वो बता दीजिए। मैंने यूएनडीपी बोला था, नॉट एनडीपी, यूनाइटेड नेशन ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP। सर और सर क्या और भी एवेन्यूज है जहां से हम लोग अपने लिए फंडिंग की तलाश कर सकते हैं? see many research organizations, tribal institutes or other institutes वो आपको फंडिंग देते हैं। तो रिसर्च का ये भी पर्पज होता है, फंड इज नॉट ओनली फॉर द रिसर्च दिस काइंड ऑफ द पीएचडी वर्क, फंडिंग आपको रिसर्च पेपर भी लिखना है। तो कभी कभी कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है नेशनल इंटरनेशनल जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको यदि आप सिनॉप्सिस भेजेंगे, सिनॉप्सिस द सी हियर अगेन सो दैट मी मोर क्लियर। सिनॉप्सिस मींस अगर उनको आप एक ब्रीफ प्रपोजल बना के भेजेंगे, इफ दैट सूट्स टू देम, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा दे मे गो फॉर फंडिंग कि हाँ भाई आपने जो प्रपोजल मुझे भेजा, पेपर आपको लिखना चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट नोट लिखना चाहते हैं, हम आपको इसमें इतने लाख या इतने हजार रुपए देते हैं, ठीक। और एंड फर्दर आप जब काम कर लेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर है यानी कहाँ से फंडिंग हुई, कहाँ से फंडिंग नहीं हुई। सी व्हेन यू अप्लाई फॉर पब्लिकेशन, अप्लाई इन द सेंस आप जो पेपर इन एनी जर्नल्स में अक्सर पूछा जाता है कि आप इस पेपर लिखने के लिए कहीं से फंडिंग तो नहीं की गई, अगर की गई है तो एक्नॉलेजमेंट में आपको लिखना होता है, फंडिंग की गई तब भी आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है, नहीं की गई तब भी लिखना होता है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्टिंग इशू in writing of this paper, or no fund has been provided or no financial support has been given in writing of this paper. So ये पैटर्न है, कहते हैं जिसके प्रोसीजर है how to write things in a proper way. So there are the organizations, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो आपको फंड दे सकते हैं आपके अपने पीएचडी वर्क के लिए भी, और यदि आप कोई फर्दर पब्लिकेशन करना चाहते हैं रिसर्च वर्क उसके लिए देते हैं, डिपेंडिंग आप जो प्रपोजल दें, अगर उनको सूट कर गया यू विल गेट द फंड। ओके सर, अभी अनमोल में आई आस्क? या श्योर। हाँ दिवाकर सर अभी क्योंकि ये तो हमें पता है रहता है कि हमें पीएचडी के लिए फंड्स मिल सकते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, इसकी कोई लिस्ट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे भी मिलती हो तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए दैट आई विल आल्सो ट्राई, लेकिन जैसे ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स हैं, यदि आपके वहाँ पे अगर आपका उस पे है रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के पास रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं बड़े लेवल के, जैसे यूएनडीपी के काइंड ऑफ एनजीओ इंटरनेशनल। ओके दिवाकर जी, मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली सर जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम लोग के अपने अपने फील्ड होते हैं ना, जैसे आपका डिफेंस का है तो डिफेंस में भी बहुत सारा ऐसा एरिया और ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो रिसर्च के लिए फंड देती हैं, तो वो आपको गूगल करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और जरा कुछ पेपर्स पढ़िए खूब अच्छे से 10-12, तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि ये वाला पेपर के लिए ये वाली फंड यहाँ से मिल रही है, तो देन आप उसको खुद लोकेट कर सकते हो। देखिए यस अनमोल, यू कैन आस्क। यू हैव सर्च एंड रिसर्च। ओके यस अनमोल, योर क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार। So, as we all are at the initial level of our research work and we haven't stepped into it yet, so we are asked to write the findings and results, like expected findings and results in our research synopsis. So what are we supposed and expected to write in it? Can you repeat your question? The expected? So what are we supposed and expected to write in the findings? Okay. As part of synopsis you are mentioning. Yes sir, here. right. Okay, yes, somebody also mentioned in case depending the kind of the work you are taking in your hands, okay, that is the expected outcome of your research. That's your I think that is your question. Yes okay sir. The expected outcome depend the kind of the planning you adapted as part of the objective, hypothesis, research design, sampling. You are supposed to relate with that कि ये करने के बाद हमको इसमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं जो है। So expected means a tentative giving of your work that if we go by this way, we may find this way, that this way. So expected outcomes means कि ये जो आप करने जा रहे हैं इससे क्या फायदा हो सकता है या क्या इसमें आगे परिणाम मिल सकते हैं। That is the reference
a kind of further hypothetical viewpoint. जी Expected outcome means further kind of the hypothetical viewpoint that you are supposed to mention as part of this. Okay. ओके सर जी और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? एनीवन एल्स? सो वन मोर क्वेश्चन Yes. सो जब भी ऑनलाइन सर्च करते हैं दैट व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द सिनॉप्सिस देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ मतलब See, मैंने भी ऑनलाइन बिफोर जी coming here, I also tried to search so many things from online, and I'll mention some of the that I also Ji. directly taken from, because this is Google Maharaj helping to everyone. You may, so there is no fixed parameters. See, if you search some of the website of some of the universities, you may they also gain what kind of the way they are synopsis. Just like in my case here, when my students submit the synopsis, we have first certain points are there, and depending on those points, if you mention as part of your research work or project work, you will get the marks. Statement of problem, hypothesis, objective, literature review, footnotes, logical analysis, okay, logical conclusion, and then the bibliography. हमने सबके लिए मार्क दे रखा है, नहीं हमको जो बच्चा सिनॉप्सिस प्रेजेंट करता है वो ये कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए देन दे सबमिट दैट सिनॉप्सिस, राइट? सो इट वेरीज, हर यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम होता है, वो मोड ऑफ सिनॉप्सिस को उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया है, एंड कभी कभी डिपार्टमेंट वाइज भी डिफर कर जाता है. सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में अलग सिनॉप्सिस की, फॉर रिसर्च क्लब सोशियोलॉजी दे आर सबमिट देयर सिनॉप्सिस इन ए पर्टिकुलर मोड. जी Okay, for the psychology student they are submit sociology in a particular mode. Okay, for the physics chemistry, so it varies, there is no fixed criteria, but only one criteria that is common, the synopsis is just an outline of your detailed future work. कि आप क्या Okay, sir. करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं. जी ओके सर थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपनी क्वेरीज पूछ चुके हैं और अब मैं इस कोर्स के को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो औपचारिक धन्यवाद देने की कृपा करें. डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पीपीएन कॉलेज. धन्यवाद कृष्ण मैम. कुमार जी. तो इनसे तो मुझे मिलते रहना पड़ेगा जो है मैम. सर्वप्रथम जी. प्रणाम प्रिंसिपल सर को. आवाज पहुंच रही मेरी? यस सर, सुन रहे हैं आप. जी जी. सर्वप्रथम सर को प्रणाम. सर ने जो फार्मिंग और रिसर्च सिनॉप्सिस टॉपिक पर अपना उद्बोधन दिया, अपने शोध से संबंधित गहन ज्ञान को अंतरसूझ परक संदर्भ संधार जिनको फ्रेमवर्क कह सकते हैं, उसमें जिस रूप में प्रस्तुत किया उससे जरूर हमारे जो शोधार्थी हैं लाभान्वित होंगे. सर ने इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च, कैसे एक रिसर्च सिनॉप्सिस बनाई जानी चाहिए, और अंधगज न्याय, जैन दर्शन के अंधगज न्याय का जिक्र करते हुए आपने बताने का प्रयास किया कि शोध क्या है, एक तरह से नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, कैसे नई चीज जानी जाए, और साथ ही थियरी पर भी प्रकाश डाला आपने, जिसको सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशंस के रूप में बताया, जिसका सामान्यीकरण हो सके. और साथ ही आपने बताया कि शोध नॉट ओनली इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज डेटा कलेक्शन, तथ्यों का संकलन है, और शोध के उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, दृष्टि प्राप्त करना आदि के बारे में सर ने डिटेल में बताया. साथ ही एक अच्छे शोध की क्या शर्तें होनी चाहिए, एक शोध समस्या के स्रोत क्या होने चाहिए, और आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स, शोध की विशेषता वगैरह पर आदि पर सर ने बृहद रूप में अंतरसूझ परक समझ प्रदान की सभी लोगों को. इसके लिए सर को विशेष रूप से खास करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. सर ने इंडिकेटिव सेक्शन में बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नीड्स ऑफ स्टडी, वेरिएबल्स ऑफ स्टडी, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग टेक्निक्स, वैलिडेशन आदि पर प्रकाश डाला. सर को इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, जिससे निश्चित ही हमारे शोधार्थी और हम सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आभा में प्राचार्य जी का भी इस संदर्भ में बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से निकालकर इस ऑनलाइन लेक्चर को में सहयोग प्रदान किया। और कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आभा मैम जो कहीं न कहीं से अच्छे वक्ता को खोज कर लाती हैं और सभी लोगों को इससे लाभान्वित करती हैं, इसके लिए उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद। तो एक बार सर को पुनः तहे दिल से धन्यवाद, इसका आपने शोधपरक अंतर्दृष्टि विद्यार्थियों को प्रदान की। थैंक यू डॉक्टर के जी, आपने बहुत ही अच्छा संक्षिप्त रूप से इस विषय को विद्यार्थियों के सामने फिर से एक बार पुनर्अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका समय देने के लिए। थैंक यू मैडम, एंड स्पेशल थैंक टू डॉक्टर कृष्णा यादव सर को, क्योंकि कई सालों बाद मुझे शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आई एम नॉट बोस्टिंग, मैं कोई तारीफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द सिस्टम वेयर आई एम वर्किंग, प्रोफेसर अनूप नोइंग मी वेरी वेल, कि वहां पे ये अवसर मुझे मिलता नहीं है, जो है, क्योंकि जो हमारे लेक्चर भी 99% रहते हैं वो अंग्रेजी में खाना पीना रहता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आपने बहुत ही सारगर्भित और जो क्लिष्ट हिंदी बोली, आई एम वेरी हैप्पी, जो है, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू सर, हम लोग फिर मौका मिलेगा और कभी होगा तो आप सर महाविद्यालय हम लोग के अवश्य आइएगा, हम लोग के शहर महाविद्यालय पीपीएन कॉलेज, तो और भी अच्छा लगेगा, विद्यार्थियों से आमने सामने बैठ के बात होगी और हम लोग भी आपसे मिलने का अवसर प्राप्त लखनऊ पड़ता है तो मुझे कोई और अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे अवसर देंगे, जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स जस्ट होम विजिट कराएंगे, भौतिक रूप से आपको बुलाएंगे सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मे आई लीव नाउ? थैंक यू यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, इफ आई नीड डाउट व्हेन यू थिंक आई मे बी हेल्पफुल, यू मे कॉल मी, जो है, जब आपको लगे किसी को जहां मैं आपकी सहायता कर सकता हूं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दैट नॉट द इशू एट ऑल। ओके, थैंक यू। थैंक यू।